गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि केमिस्ट्री का पेपर 1 है, 12th की क्लास है, यूनिट 3 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी वेरिएशन मोलर कंडक्टिविटी में कैसा होता है कंसंट्रेशन के साथ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। यानी मोलर कंडक्टिविटी की वेरिएशन कंसंट्रेशन के साथ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो सबसे पहले हम लोग वेरिएशंस पढ़ेंगे, वेरिएशंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो वेरिएशंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, यानी मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन कंसंट्रेशन के साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस slowly with dilution and there is a tendency for molar conductivity to approach a certain limiting value when the concentration approaches zero, that is when the dilution is infinite, so प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान दीजिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा स्लोली डाइल्यूशन के साथ, और एक टेंडेंसी होती है मोलर कंडक्टिविटी की जो अप्रोच करता है सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू का। जब कंसंट्रेशन अप्रोच करेगा जीरो तो डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो द मोलर कंडक्टिविटी व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी और इनफाइनाइट डाइल्यूशन। उसे हम लोग मोलर कंडक्टिविटी या इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं। तो द मोलर कंडक्टिविटी, जब मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के साथ अप्रोच करता है जीरो यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो इसे हम लोग मोलर कंडक्टिविटी या इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा डिग्री एम और लैम्डा इनफाइनाइट एम। thus lambda m is equal to lambda degree m when c that is 0 at infinite dilution. It has been observed that, यह पाया गया that the variation of molar conductivity, वेरिएशन जो मोलर कंडक्टिविटी में होता है with concentrations के साथ may be given by the expression। ये कौन सा एक्सप्रेशन से दिया गया, lambda m is equal to lambda degree m minus ac half, जहां पे a क्या है, एक कांस्टेंट है और a डिग्री क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशंस का, ठीक है। ये इक्वेशन क्या कहलाता है, ये इक्वेशन जो आपका कहलाता है, ये इक्वेशन क्या कहलाता है, ये इक्वेशन आपका कहलाता है डेबे-हाकल-ऑन-सैगर इक्वेशन, और ये फाउंड टू बी होल्ड गुड एट लो कंसंट्रेशन। और पाया गया है ये बहुत ही अच्छा होता है कहां पर, लो कंसंट्रेशन पे। चलिए आगे चलते हैं, इसी टॉपिक को हम लोग आगे पढ़ेंगे, इस टॉपिक को लेके हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए इस टॉपिक को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो लो कंसंट्रेशंस के ऊपर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए केमिस्ट्री को साधारण तरीके से इजी स्टेप में पढ़ने के बाद ये पूरी तरह से माइंड में सेटअप हो जाता है, लेकिन अगर तू तड़ाक करके पढ़िएगा, उठा पटक करके, कभी यहाँ कभी वहां, ये मैं पढ़ा रहा हूं आपको एक तरीके से स्टेप वाइज, और एनसीईआरटी में आपका स्टेप वाइज नहीं है, एनसीईआरटी में शॉर्ट में लेके गया। तो स्टेप वाइज अगर आप पढ़ेंगे तो स्टेप वाइज में आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन समझ में पूरा आ जाएगा। तो वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन विद इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, विथ इलेक्ट्रोलाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। विथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को लेकर के हम लोग शुरू करते हैं। इसके आगे का टॉपिक हम लोग आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू कर रहे हैं।
चलिए शुरू करते हैं। So the variation of molar conductivity with concentration, the variation of molar conductivity with concentration can be studied. Can be studied by plotting the value of lambda m against square root of concentration, square root of concentration C14. The plot of variation of molar conductivity, the plot of variation of molar conductivity with C 1/2 for KCl and SCl are given. For KCl and SCl are given in figure. Let us draw a figure of diagrammatic structure of the figure. It may be the figure. This is the figure of C1/2, and you can see there is a variation. One, two, three, 4, 5, and 6. Okay. There is also 1, 2, 3, 4. One, two, three, 4, 5, and 6. Okay. Two, three, 4, 5, and 6. क्या बोल रही है बोलो? 1, 2, 3, 4, 5, and 6. These are the variations. 1, 2, 3, 4, 5, 2, and 6. These are the variations. So this is the delta M, and this is the SCl. This is the SCl. And this is the KCl. Lambda M C/12. This is the figure A. सेव क्या है वहाँ? Second is the figure B. Let us draw this figure. Okay.
1 2 3 4 5 6 and 7. Okay, so these are the things you have to be understand clear in your mind. This is the variations of this is the variations. This is a weak electrolyte. This is a weak electrolyte. And this is CS3COH. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 4 5 that is the CS3COH acetic acid delta M C1 by half. This is the figure B. Figure A and this is figure B. And that is the figure variations of molar concentration. Variations of molar concentration lambda m with the square root of concentration root of concentration C1 by 2 for A strong electrolyte and weak electrolyte. Strong and weak electrolyte. A and B weak electrolyte. So these are the things you have to be just keep in your mind. These are the things we have to be keep it in our mind. These are the things. So my dear students, let us understand this figure. It has been noticed that this is for weak electrolyte also. It has been noticed that that the variation lambda A with concentration C1 by 2 is small between 4 to 10%. 4 to 10% only so that the plots can be extrapolated to zero concentration. We are discussing the strong electrolyte first. Approaches zero called the intercept gives the limiting. The intercepts gives the
limiting value of molar conductivity, value of molar conductivity when the concentration approaches zero, concentration approaches zero, called molar conductivity at infinite dilution, called molar conductivity at infinite dilution. Delta m0, delta m degree, the slope of the line is equal to the slope of the line is equal to A. The value of constant A for a given solvent and temperature depends on the type. Depends on the type of electrolyte that is the charges on the cations and anion produced on the dissociation of the electrolyte in the solution. Thus NaCl is known as कैसे किलो चावल दिया था 1,1 पानी बंद कर देना electrolyte CaCl2S21 पानी बंद करो 21 यार गेटो बंद कर and MgSO4 as 22 electrolytes. All electrolyte of a particular type have the same value of A. Have the अरे वो लोग क्यों ना value for it. So my dear students, let us understand. So we are discussing the variation of molar conductivity after the Debye-Hall substitution. It is found that good for lower concentration. The variation of molar conductivity with concentration can be studied by putting the value of lambda m against square root of the concentration C40 by C1 by 2. सो वेरिएशन मोलर कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन के साथ स्टडी किया गया वैल्यू को प्लॉट करने के बाद लैम्डा एम अगेंस्ट द स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन C1/2
प्लॉट जो आपका है, द प्लॉट ऑफ वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद C1/2 फॉर KCl एंड HCl। प्लॉटिंग किया गया KCl और HCl के लिए, आप देख सकते हैं, आर गिवन इन फिगर ए। तो इट हैज बीन नोटिस्ड, यह नोटिस किया गया, द वेरिएशन ऑफ लैम्डा ए, द वेरिएशन ऑफ लैम्डा ए, variation of lambda with concentration C1/2 is small between 4 to 10% only, 4 to 10% only, so that the plot can be extrapolated to zero concentration, extrapolated zero concentration क्या हो गया, और इंटरसेप्ट करता है लिमिटिंग वैल्यू को मोलर कंडक्टिविटी when the concentration approaches zero, called molar conductivity or infinite dilution, that is the lambda m। तो इंटरसेप्ट करके द लिमिटिंग वैल्यू मोलर कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन अप्रोच करता है जीरो, जिसे हम मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशंस के ऊपर, तो जिसे हम लैम्डा एम कहते हैं। स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू, द स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू माइनस ए, सॉरी इक्वल टू ए, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए फॉर ए गिवन सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वैल्यू कांस्टेंट ए का गिवन सॉल्वेंट का टेम्परेचर डिपेंड करता है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का, चार्जेस ऑन द कैटायन, जो चार्जेस कैटायन के ऊपर और एनायन के ऊपर प्रोड्यूस होता है ऑन द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन। चार्जेस जो वैल्यू कांस्टेंट ए का गिवन सॉल्वेंट का और टेम्परेचर का डिपेंड करता है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के, दैट इज द चार्जेस ऑन द कैटायन, चार्जेस कैटायन पे कैसा है एनायन के ऊपर प्रोड्यूस ऑन द डिसोसिएशन, और वो बन रहा है डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन के कारण। thus NaCl is known as the 1,1 electrolyte, CaCl2 has 2,1 and MgSO4 has 2,2 electrolyte। all electrolytes of a particular type have the same value of it, have the same value for it। हम लोग सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ेंगे, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट का मैंने डायग्राम भी बना दिया है यहाँ पे, चलिए इसको शुरू करते हैं। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये आपका आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, तो इसे हम लोग देखेंगे और ये कंक्लूड करने के बाद ये आपका लास्ट टॉपिक रहेगा, वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग किसको पढ़ेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तब हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ने वाले हैं, चलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट देखते हैं। Variation of concentration, variation of molar conductivity with concentration for weak electrolyte, variation of concentrations with concentrations with concentration for weak electrolytes। चलिए तो अब हम लोग कंप्लीट करेंगे। The weak electrolyte associate to a much lesser, the weak electrolytes dissociates to a much lesser extent, to a much lesser extent as compared to a strong electrolyte, as compared to strong electrolyte, ठीक है, strong electrolyte, therefore the molar conductivity is low, therefore the molar conductivity is low as compared to that of
strong electrolytes. However, the variation of lambda m with C1 by half is very large and so much is very large and so much so that we cannot obtain molar conductance. We cannot obtain molar conductance at infinite solution lambda m degree by extrapolation of the delta m versus C1 by 2 plots. The behavior of weak electrolytes such as CS3COOH means acetic acid is shown in figure B. You can see here in figure that is a strong electrolyte for and that is a weak delta M C1 by half, that is a C weak electrolyte CS3COH in figure B. It may be noted that the lambda m degree value for weak electrolyte can be obtained by an indirect method based upon Colbrook law. Okay. So let us discuss these things in a clear concept. We will take the explanation of strong and weak electrolyte in previous next class. So let us discuss it in a clear and broader manner. So let us understand. So the variations of molar conductivity with concentration for strong electrolyte we have completed. Right now we are discussing the weak electrolyte. So the variations of molar conductivity with concentration for weak electrolyte. Next topic है बच्चों इसका. ये आपका सेकंड है. Variations of molar conductivity with concentration for weak electrolyte. यानी variation molar conductivity का concentration के साथ weak electrolyte के लिए. तो the weak electrolyte dissociate to a much lesser extent as compared to strong electrolyte. Weak electrolyte dissociate करता है बहुत कम extent में in comparison of strong electrolyte के. अतः हम कह सकते हैं the molar conductivity is low as compared to that of strong electrolyte. Molar conductivity low होगा in comparison of strong electrolyte के. However, the variation of lambda m with C1 by half is very large.
and so much so that we cannot obtain molar conductance at infinite dilution lambda degree m by extrapolation of the lambda m versus C1 by plots, half plots. तो अतः हाइवर ये वेरिएशन जो लैम्डा एम का C1 बाय हाफ के साथ बहुत बड़ा होगा और सो मच होगा कि इस ये ऑब्टेन नहीं कर पाएगा मोलर कंडक्टेंस को एक इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पे, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पे जो लैम्डा डिग्री एम होगा एक्सट्रापोलेशंस के द्वारा लैम्डा एम के वर्सेस सी हाफ प्लॉट्स की. तो द बिहेवियर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट सच एज CH3COH एसिड इज शोन इन फिगर बी. आप देख सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैसा जा रहा है फिगर. तो ये स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन C1 बाय हाफ के वेरिएशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन लैम्डा एम, जिसका स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन बाय हाफ और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप देख सकते हैं. इट मे बी नोटेड दैट, ये नोट करने लायक बात है, दैट द लैम्डा डिग्री एम वैल्यू फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, लैम्डा डिग्री एम वैल्यू फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एन इनडायरेक्ट मेथड बेस्ड अपॉन कॉलरॉक्स लॉ. इसको जो निकाला जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के मेथड को, ये नोट करने लायक बात है कि लैम्डा डिग्री एम का वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो ऑब्टेन होता है, ठीक है, वो एक इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा निकाला जाता है जो बेस्ड होता है कॉलरॉक्स लॉ के आधार पर. ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में कॉलरॉक्स लॉ को. अब हम लोग का एक्सप्लेनेशन बच गया वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंडक्टेंस, कंडक्टर बिहेवियर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड कंडक्टर बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ये दोनों हम लोग कल देखेंगे, ठीक है. उसके बाद हम लोग कॉलरॉक्स लॉ भी देखेंगे. तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, ये भी जानना जरूरी है एक्सप्लेनेशन इसका. तो एक्सप्लेनेशन भी हम लोग कल देखेंगे. चलिए आज के लिए इतना ही. सो मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो. दिस इज सूर्य आनंद, केमिस्ट्री टीचर. वेलकम इन माय चैनल सूर्य आनंद टीचिंग. गिव मोर व्यूज, लाइक एंड शेयर टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12. Don't skip the video, go throughout the complete video, and if you want to learn the chemistry the simple easy step and scientific way, step by step wise, then come and join my channel Suraj Anand Teaching. Thank you all of you. Take care. Good night.